Sir, Sir, what we value should we take for the Sorry. equation A is greater than equals to B in fourth problem? In fourth problem, There is a constraint of A is greater than equals to B. So, like, how should we calculate the values for that? हाँ, so A is greater than or equal to B, तो वहां पर आपको इसको ये करना पड़ेगा. ओके, ये इस तरह से हो जाएगा A माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. आई विल शेयर द स्क्रीन और मैं आपको करके बताता हूँ. एक सेकेंड, सॉरी. Better if I share the entire screen, because then when we are working on solver, that time you may not be able to see. So I will share the entire screen. Now this equation, this is what you are referring to, correct? Yes, sir. तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे. It is exactly like A greater than or equal to B. So जब मैं इसको B को इस तरफ लेके जाऊंगा तो it will become A minus B greater than or equal to 0. Now can I put it there in the equations now? Coefficient for A would be 1, for B it would be minus 1. Correct? Yes, sir. ठीक है. So good, at least उतना आप लोगों ने किया है. So if I have to put it, because we'll, even if we are working it with Torah, तो अपने को ये conversion की जरूरत पड़ेगी. Okay, so my formulation would be, first is my objective function. So my objective is to maximize returns z equals to 0.07 into A plus 0.10 into B. This becomes my objective function, correct? What about my constraints? I will be using it for formulation also. So my first is A plus B has to be less than or equal to 30,000. Second is E has to be less than or equal to 12,000. A has to be greater than or equal to 6,000. Then this will be written as A minus B greater than or equal to 0. Okay. Want A always to be greater than B. So whatever values we are going to put, if A is always greater than B, so we will always have a non-negative difference. And the last one is A comma B has to be greater than or equal to 0. So this becomes my formulation. Are we fine up to this? Yes, sir. Now the next thing is to get coordinates for these, correct? So हम पहला वाला चाहिए तो equation लेते हैं. We'll put it here. So for that, this will be A, this will be B. My coefficients for A and B would be 1, 1. Here it would be 30,000, correct? Yes. And
if I say A is 0, what would be the value of B? It would be this divided by 1. And when I say B is 0, so that time it would be 3000 divided by, correct? Am I right? Yes. Yes, sir. Okay. So ये मेरा एक एक इस तरह का आ जाएगा. Now let me do it for the second one. Second इसके लिए क्या होगा? A will be पहले इसको हम लोग इधर पर कॉपी कर लेते हैं so that it is easy. Now for this A will be 0, B will be 1. What about this? 12,000. Correct? अब ये इधर पर 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि B will always be 12,000 irrespective of whatever values that I am going to have it for A. Okay, so मैं इसको भी चाहिए तो 12,000 ले लेता हूँ, so this will still remain 12,000 only. So A का वैल्यू कुछ भी होने दो, B will always be 12,000. ठीक है? जब हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए हमको इसकी जरूरत पड़ती है, बाकी और कुछ नहीं है. Now the third one, I am doing this so that जिसका जो भी लोग कंफर्टेबल नहीं है उन लोगों का रिवीजन हो जाएगा. Okay, so now here A will have a coefficient 1. What about B? Sorry, मुझे ना एक्चुअली ये कॉपी करना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा रहता. A का coefficient would be 1, B would be 0, and this would be 6,000. So यहाँ पर we can have 0. B का वैल्यू कुछ भी होने दो, A will always be 0. So मैं इसको अगर 6,000 ही रख दूं तो भी still this would be 6,000 only. So whatever values I take, it will still be the same. Fine. So मैं यहाँ पर चाहिए तो 0 ले लेता हूँ और यहाँ पर 6,000 ले लूँगा, तो वो मेरा पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए दिक्कत नहीं होगी. Are we clear? Next is this one. So just formatting के लिए same as it is डाल रहा हूँ, and I will take this equation A minus B. So इसका coefficient 1, B का क्या होगा? -1, and this has to be 0. So now अगर मैं A equals to 0 लेता हूं तो B भी अपने आप ही 0 हो जाएगा, करेक्ट ना? Yes. हाँ, so B भी 0 हो जाएगा. फाइन. बट व्हाट अबाउट दिस? अगर मैं A को 6,000 लेता हूं तो B विल बिकम -6,000, करेक्ट? तो ही वो 0 होगा, बराबर ना? हेलो, So here we are entering the value manually, like 6,000, 6,000. Sorry. Because if we are considering the earlier formatting, then it will take the value 0 at all the 4 cells. हाँ, वैसे अर्लियर फॉर्मेटिंग के हिसाब से वो सब जगह 0 ले लेगा, बट वैसे नहीं होता है ना, वो तो सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए था. बट रियलिटी ये है कि if A is 0, B will also be 0. If A is 6,000, B will also be 6,000. और वो दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, then only it will be, result would be 0. Correct?
6,000 Yes. minus 6,000, then only it would be 6,000. It would be 0, correct? जो हम लोग स्कूल में जो ग्राफ्स वगैरह के लिए पढ़ते हैं वही सेम कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। एंड फिर बाद में आपका सिर्फ एक ये इसका बचता है, तो वो हम लोग डालेंगे बाद में। एज ऑफ नाउ विल जस्ट प्लॉट दिस फर्स्ट, ठीक? सो मान लो मैं इतना वैल्यूज लेता हूँ एंड आई स्टार्ट विथ माई स्कैटर प्लॉट। I take this one or this one, whatever that is convenient, switch the row to column. So this is what we have got. I'll go to select data, fine, edit. अब यहाँ पर ये इसकी जगह पर I would say this is that equation, fine, okay. So अब इसमें axis भी ऐड कर देते हैं। So axis titles, this would be product, yeah, sorry, bond A, and here it is bond B, fine. यहाँ तक ओके? So my common region is, since we are talking about less than or equal to, so I am talking about this region. This is my common region. When I add this B less than or equal to 12,000, so let me add that. This is my series name, X values. Are we able to follow? ये मेरे को थोड़ा और ज़्यादा तक का वैल्यू लेना चाहिए ताकि वो पूरा कट करके इधर तक निकले। सो 30,000 है, सो आई विल हैव टू टेक इट अप टू 30,000। सॉरी, फाइन। So B is less than or equal to 12,000. So ये अपना 12,000 वाला है, तो bond B less than or equal to, so that means we are talking about this region. Fine. Are we okay? Is everybody Yes, sir. comfortable till now? Okay. Now A greater than or equal to 6,000. So when I say A greater than or equal to 6,000, I will have to add that also. अभी ये भी कम ही आ रहा है, फाइन। तो अभी इसको भी आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि ये ऊपर तक जाए, बराबर। सो A greater than or equal to 6,000, that means I'll have to change this. इसको हम कितना तक ले लें, से 30,000 तक का कर लेते हैं, फाइन। सो माई कॉमन एरिया इज व्हाट? कॉमन एरिया इज, यहाँ पर क्या है, इट इज लेस देन और इक्वल टू, सो ये वाला हो गया। यहाँ पर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सो ये वाला हो गया, करेक्ट। सो दैट मीन्स नाउ माई कॉमन एरिया इज दिस पार्ट, फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन and below this line, correct? Am I right? Yes. Okay. Now if I add one more, A minus B wala, my X values will be these two,
and my y values करेक्ट से ओके। अब इसमें ये सिर्फ यहीं पर तक आ रही है। इट इज a माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस साइड। तो अभी यहाँ पर से भी ये आगे ऐसे पास ऑन होगा, करेक्ट। उसको और आगे तक बढ़ाना पड़ेगा। हम लोगों ने सिर्फ 6000 तक के लिए लिया है। लेट्स टेक इट फॉर से अप टू 30,000 तक ले लेते हैं। I will have this one also as correct. What is my common region now? This small one, this small area. Fine. This is the region that I am referring to as of now. Are we okay? Is everybody able to follow this? Yes, sir. Yes. Okay, so now we can only just look at the extreme points. अब extreme points के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला point क्या आ रहा है, उसके लिए मेरे को वो सब भी ऐड करना पड़ेगा और इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, करेक्ट। सो शायद उतना प्रिसाइज हमको ना मिले, जितना मिलेगा उतने में करेंगे, ठीक है। We'll just increase the size so that we are able to see it better. This is that area that we are referring to, correct. So अभी इसमें ये 5000 था, यहाँ पर 10,000 है, मतलब 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. This is how it is going. So ये आपका, इसको आप मान के रफली हम ले रहे हैं, से this point would be 5,000, 6,000, correct. If I look at this point, it would be 5,000, 6,000. Bond A would be and for B it would be 6,000, correct. Are we okay up to this? Hello? Yes, sir. What about this point? It would be 12,000, 12,000, correct na? What about this one? 6,000, एक मिनट, यहाँ पर भी this was not, this was 6,000, हाँ 6,000, 6,000. This was not 5,000. Correct. So ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया. What about this one? It is 6,000, 12,000. तीन ही पॉइंट्स रहेंगे. What about my profit value at this juncture? Equals to profit function क्या था हमारा, 0.07 into A plus 0.1 into B. Into
A plus 0.1 into B. Maximum profit we are getting it at 12,840. That means we are investing 12,000 completely at this juncture. ठीक है, so आपको टोटल प्रॉफिट्स मिल रहा है इतना profits, or we can call it as returns. Fine. कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है. Yes, sir. Got it. Yes, sir. Now, when I talk about ISO profits line method, so we will create a profit line for that. और वो profit line हम कहाँ से लाएंगे? ये जो है इसी को हम यूज करने वाले हैं. I'm just copying this. Profits oblique returns z equals to this much. Equals to कुछ तो वैल्यू आएगी, वो देखते हैं क्या आती है. We'll see that. Okay. अब हम इसको इक्वेशन की तरह बना लेंगे. So let us say we'll take this. So हम ये वैल्यूज चेंज करने का काम करेंगे. कोएफिशिएंट्स पहले डाल दें. It is 0.07. Here it is 0.1, and this is the value that we are going to change. So मान लो हम 6,000 या 2,000 से शुरू करते हैं. फाइन. और ताकि हम इसको इधर इक्वेशन में डाल सकें, तो आई विल पुट इट एज इन अ डायनामिक फॉर्म इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट. इसको कोट्स में डाल देता हूं, कॉमा, एंड वॉट एवर इज द वैल्यू. अगर जैसे जैसे वो वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे हमको दिखेगा. फाइन. सो let me add it to the graph. Add. This is my series name. X values are these. Y values are these. And I say OK. कौन सा है? ये है, ये वाला लाइन. आपका प्रॉफिट्स वाला दिख रहा है. ये नहीं, सॉरी, ब्लू, ये वाला है. फाइन. सो अभी देखते हैं अपने को मैक्सिमम वैल्यूज कितना कितना तक आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है. मैंने ये सब बराबर किया था. सो लेट मी इंक्रीज दिस. बाहर ही चला गया.
मतलब कुछ इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है क्या मेरे? हाँ सर, शायद सर लेफ्ट में देखिए ना, लाइक आपने जो उधर निकाला है ए एंड बी का, हाँ, इक्वेशन अलग में अलग मैं है। डायरेक्ट सीधा इधर पर ये वैल्यूज डाल रहा हूँ, एक्चुअली में दिस शुड बी हैव बीन अ फंक्शन, सो इक्वल्स टू दिस इनटू ए और बी का वैल्यूज मुझे डालना पड़ेगा। एक मिनट, sorry, if I take this, if I take a equals to 0, b equals to this upon this, if this is 0, so this has to be, अच्छा हाँ, अभी इसमें क्या हो जा रहा है कि मेरे सारे कंस्ट्रेंट्स ही उड़ जा रहे हैं। मेरा ग्राफ ही पूरा एकदम से वो चेंज हो जा रहा है। इसमें कुछ तो गलत कर दिया है मैंने। सर आपने वो वैल्यूज नहीं लिए क्या जो you calculated there, the profit returns? कौन सी? So this one, the profit returns one. 0.07 ये कोएफिशिएंट डाल रहा हूँ, प्लस 0.10 इंटू बी, कहीं कुछ तो गलत किया मैंने। ठीक है, इसके लिए अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। इन द मीन टाइम वी विल सी सॉल्वर को कैसे करेंगे इसमें, ठीक है? मुझे अभी मेरी गलती नहीं समझ में आ रही है, समझ में आएगी तो करता हूँ मैं। फाइन, इन द मीन टाइम वी विल सी सॉल्वर में कैसे करेंगे। फाइन, हेलो? Yes, sir. Yes sir. रियली सॉरी अबाउट दिस, कहीं तो कुछ तो मैं सीवियर मिस्टेक किया हूँ। सॉल्वर के लिए जब हम जा रहे हैं, सो वी विल से बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी, ये दोनों हमारे ये आ गए, और सारे इक्वेशंस जो हैं ये जो हैं इन्हीं को हम उधर पर काम में लाएंगे, ठीक है? सो आई एम जस्ट कॉपिंग इट सो दैट मुझे बार बार ऊपर ना आना पड़े देखने के लिए। I'm just putting it here temporarily and we will delete it later on, ठीक? अब इसमें आपका पहला चीज है बजट, करेक्ट? और उसमें वो बोल रहा है ए के लिए कोएफिशिएंट इज 1, बी के लिए कोएफिशिएंट इज 1 एंड योर इनइक्वालिटी साइन इज लेस देन और इक्वल टू, एंड हाउ मच इज द रिसोर्स अवेलेबल? रिसोर्स अवेलेबिलिटी आपका कितना है? 2 lakhs. 30,000। रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज 30,000। अब सिमिलरली ये जो दूसरा है दैट इज लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड बी, करेक्ट? सो मैक्सिमम
इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड बी। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड बी के लिए कितना बोल रहा है? बॉन्ड ए 0, कोएफिशिएंट वुड बी 0, whereas in B it would be 1, and it has inequality sign has to be less than or equal to 12,000. Fine. इतना तक ओके? Yes, sir. Now second is maximum investment in minimum investment in bond A. मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड ए, तो यहाँ पर ए के लिए कोएफिशिएंट वुड बी 1, बी के लिए इट इज 0, एंड इनइक्वालिटी साइन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड दिस इज 6000. फाइन. अब ये इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन है इन बॉन्ड ए एंड बी. सो यहाँ पर दोनों के लिए एक के लिए कोएफिशिएंट 1 है तो दूसरे के लिए -1, एंड इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यहाँ तक ओके? नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू से इज इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स. सो टाइप ए के लिए और टाइप बी के लिए. सो मैं दोनों के लिए ब्रैकेट्स फॉर्म कर दिया. अभी मान लो टेम्परली आई एम सेइंग 1 and 1. ओके, 1 rupees इन दिस, 1 rupees इन दिस. सो मेरा एक तरह से देखा जाए तो मेरा बजट कितना यूज हो गया? इक्वल्स टू दिस इनटू this one plus this equals to this value into this value plus, इधर दिखा नहीं रहा है तो मैं साइड में क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ इधर पर, this into this one. तो ये बराबर है 1 1 2 उस हिसाब से आ गया. एंड अभी अगर मुझे वो करना रहता तो मुझे ये सेल्स को फ्रीज करना चाहिए था. सो आई वुड से रिसोर्स यूटिलाइज्ड. रिसोर्स यूटिलाइज्ड के हिसाब से अगर मैं चलता हूँ सो इसको मुझे पहले फ्रीज करना पड़ेगा या फिर मैं सम प्रोडक्ट यूज कर सकता हूँ. ठीक है. सो इफ आई यूज सम प्रोडक्ट ऑल्सो इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉमा दिस. ये वाला मेरे को बार बार यूज करना है तो आई विल फ्रीज इट, एंटर, एंड इफ आई पुल इट फॉर ऑल अदर्स. फाइन. इतना तक ओके है? यस. रैंडमली जस्ट चेक कर लेना है. एंड अब ये इनइक्वालिटी साइंस के लिए के हिसाब से मैं अपने कंस्ट्रेंट्स बनाऊंगा. फाइन. बट अभी यहाँ पर मेरे को मालूम नहीं पड़ा कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है. सो लेट अस से आई ट्रैक माय टोटल इन्वेस्टमेंट हियर. This is my total investment. Right? So this total investment will be equal to, इसका कुछ और दिया है क्या?
सॉरी, मेरा रिटर्न्स कितना है, टोटल रिटर्न्स, हम इधर पर टोटल रिटर्न्स लेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं, टोटल रिटर्न्स, क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना। यहाँ पर हम चाहिए तो पहले रिटर्न्स लिख लेते हैं। यहाँ पर का रिटर्न इज 7% और यहाँ पर का रिटर्न इज 10%. So that means this will be equal to again some product of this comma this two. बराबर है ना, इसका 7% मिला, इसका 10% मिला, टोटल 0.17 मिला, करेक्ट? आर वी ओके अप टू दिस? Yes, sir. Now I go to data solver. I will choose this as my objective function. Objective is to maximize. What are the variable cells to be changed? Investment in bond A and bond B. Then I say add the constraint. Resource utilized should be less than or equal to this value. This is your budget. फिर दूसरा इसके लिए भी this has to be less than or equal to this value. Say add. This value has to be greater than or equal to this value. उसके बाद में और क्या बचा? This value मैंने कौन कौन सा डाला? ये वाला डाला ना, थर्ड वन। यस, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है? अच्छा, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू है। ग्रेटर देन इक्वल टू। सो ये भी आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा। देन दिस वैल्यू एंड आई से ओके। जरा एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा है। D43 F43, D43 F43, so less than equal to D44 F44, less than equal to D45 F45, greater than equal to D46 F46, greater than or equal to. So make unconstrained variables non-negative. Make this simplex LP and say sorry. 18,000, 12,000 ये आपके सॉल्यूशंस हैं और उस हिसाब से आपको 2460 मिलेगा। हमने यहाँ पर वैल्यूज में शायद कुछ गड़बड़ की थी लेने में, या रीजन हमने बराबर सेलेक्ट नहीं किया है। शायद जो नीचे वाला रीजन है ना वो सिलेक्ट करना था। ये वाला क्या है? B लेस देन और इक्वल टू 12,000, तो ये तो आपका इधर आ गया। A प्लस B लेस देन और इक्वल टू 30,000, A greater than or equal to 6,000. हाँ, ये वाला साइड A minus B greater than or equal to 0. A minus B कौन सा वाला है? ये येलो वाला, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मतलब हम ये वाला, यहाँ पर हमने कुछ तो गड़बड़ की है भाई, ठीक है? बट दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, दिस इज योर करेक्ट आंसर। सॉल्वर में मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। क्लियर?
अरे सर वो पीएनएस वाले क्या गलती से पानी गिर गया ओह ठीक है तो उसके लिए हाँ थैंक यू सर सर थोड़ा सा
start? Yes, sir. Sorry, I came to know my mistakes. Okay. अच्छा बड़ा गुफअप था. यहाँ पर रिटर्न्स के इसमें 0.07 इंटू B37 प्लस 0.1 की जगह पर इट वाज 1, जिसकी वजह से आई वाज गेटिंग वेरी हाई वैल्यूज. ओके, सो आई चेंज दैट. सेकेंड थिंग इज, मैंने रीजन गलत मार्क किया था. रीजन वो ये वाला नहीं होगा. इफ आई लुक एट दिस रीजन on this side of this line A equals to B, B is greater than A. So actually I was supposed to mark the region on this side where A, this is value of A is greater than B. Okay, so this side was supposed to be marked. So these were the two mistakes which I did. Are we clear? Yes, sir. Hello? Any doubts? ये जो मेन जो था ना critical was this one. A minus B greater than or equal to 0. It says A is greater than or equal to B. So that means on this side the value of A is greater than B. Okay. और इस साइड में अगर हम जाएंगे तो वैल्यू ऑफ B will be greater than A. So ये मिस्टेक थी. सेकंड, मैंने यहाँ पर जो प्रॉफिट्स जो कैलकुलेट किए वहाँ पर फॉर्मूला में 0.1 की जगह पर 1 डाला था. सो ये दोनों बड़े भारी मिस्टेक्स थे. अब ऑटोमेटिकली उसके बाद में दीज थिंग्स विल वर्क आउट वेल. अभी मुझे जितना भी वैल्यूज जो भी मैं डालते जाऊंगा उस हिसाब से आ जाएगा. सो लेट अस से इफ आई पुट इट एज 420, सो वो आपका यहाँ पर चला जाता है. सो इफ आई मेक इट 1020, सो यहाँ पर आ गया. देन इफ आई मेक इट 2040, so here 2460, so it goes up to this. Okay, so just वो पॉइंट टच करते हुए जा रहा है जो हमारा रीजन का पार्ट है. so that is where 2460 this becomes your operating point. Are we okay? Are we comfortable with this? कहीं कुछ डाउट है? Any doubts anywhere? Not right now, sir. Okay, good. So this is how you solve it using solver. ये भी क्लियर हो गया? Fine. अब आप देखिए यहाँ पर आपको ये भी मालूम पड़ता है कि कौन कौन से इक्वेशंस बराबर से जा रहे हैं और कितना वो वैल्यूज वगैरह बराबर आ रहा है. 6000 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 18,000 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6,000, 12,000 लेस देन और इक्वल टू 12,000, 30,000 लेस देन और इक्वल टू 30,000. तो उस हिसाब से सारी वैल्यूज बराबर सेटिस्फाई हो रही है. सो टोटल रिटर्न that he will be able to generate out of this would be 2460. Fine. So we will take up the next numerical.
Is everybody comfortable? Can we move to the next? Yes, sir. Yes, sir. अब आपका इवन आइसो प्रॉफिट लाइन भी वो भी बराबर हो गया ना, जैसे जैसे वैल्यू चेंज करके यू कैन सी दैट. फाइन. या 4, 5, 6 आप लोग ट्राई करोगे ऑन योर ओन. विल स्टार्ट विद दिस वन, दिस स्पेशल केसेस. ठीक है, यू विल ट्राई 4, 5, 6 ऑन योर ओन. नेक्स्ट सेशन में आप लोग बताओगे, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Good. We'll look at these special cases. Fine. Multiple optimal solution, infeasible solution and unbounded solution. ये इसमें क्या होता है? So let us take up this one. Here we are not talking about any formulation, but we are looking at how when do we say that there are multiple optimal solution in a graphical this thing. Fine. ये कौन सा है? 7 है. Now let us look at plotting these equations. Fine. So we have got two variables, say x1. अब इसको and x2. These are the two equations that we have. पहला आपका constraint 1. हमारे पास में कितने constraints है? 1, 2, 3. So constraint 1, constraint 2, constraint 3. So coefficients क्या है? We'll take that. So 1, 1. This is less than or equal to, and then 10. This is your RHS value. Here second one, it is 0, 1. It has to be less than or equal to, and then we say 15. And what about this one? 3x1 plus x2. So 3, 6 less than or equal to, and we say 18. And definitely your non this thing. ये अभी हम लोग अगर इसको सॉल्वर से सॉल्व करने जाएंगे तो कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा. We can do that, but rather than that we will be looking at doing it using graphical first. So first लेते हैं, we'll plot that. So ये values ले लेते हैं and we'll try. इसे formatting के लिए मैंने यूज किया है. So my coefficients at this front 1, 1, 1, and it is 10. So if x1 is 0, so x2 would be 10 divided by 1, and when x2 is 0, x1 would be 10 divided by
this one, right? Are we okay up to this? इतना फाइन है ना? यहाँ पर कुछ डाउट्स है? What I have done is I have just tried to find the coordinates, x and y intercept. This you are doing through solver, no? और नहीं, I'm not doing it with solver. Solver से बाद में करेंगे, पहले हम graphically समझ के लेते हैं. Fine? Yes. क्योंकि इसमें ना जो और भी जो कुछ प्रॉब्लम है ना, कुछ आप सॉल्वर से भी सॉल्व नहीं कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, अनबाउंडेड सोल्यूशन, इनफेजिबल सोल्यूशन, ये आप सॉल्वर से भी सॉल्व नहीं कर पाओगे. ओके, दिस इज फाइन, दिस कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग सॉल्वर. ओके, you will come to know why we will not be able to solve using solver also. I will tell you that also. हम क्लास में जो भी कुछ कवर कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए द एक्सट्रीमिटीज आर बीइंग कवर्ड. ओके, विद इन योर सिलेबस वॉट एवर एक्सट्रीमिटीज आर पॉसिबल आर बीइंग कवर्ड इन द क्लास. सो कुछ भी नहीं बचा है. आप ये समझ के चलिएगा कि आपको एग्जाम के टाइम पर यू विल नॉट गेट एनी सरप्राइज. सरप्राइज वुड बी ओनली इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुलेशन, that too if you are not able to understand the question, else there will not be any surprises. Fine, but formulation easy नहीं रहेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. So for that you will have to practice formulation. Fine. Now let us look at the second one. Second one is x2 less than or equal to 15. So x2 less than or equal to 15, तो क्या होगा? x1 का coefficient would be 0 and x2 का it would be 1. This value would be 15. So that means x2 will be 15 under all circumstances, irrespective of the value of x1. Clear? Are we okay up to this? Yes, sir. Okay. Let me plot the be ready with the third one. Third one क्या है आपका? 3x1 plus 6x2 less than or equal to 18. So that means coefficients would be 3, 6, and this is 18. Correct? इतना तक okay? All the three constraints can be plotted now. Let us take this and start plotting. So I will go for scatter chart. हमेशा पहले वो ऐसा x के फॉर्म में आता है. Just switch the row and column and it will take care of. Fine. Go to your data. Edit this one so that it starts representing exactly what it should have. Now when I say x1 plus x2 is less than or equal to 10, so that means I am actually talking about this region. Correct? Inner region. Are we okay up to this? Yes, sir. Okay, now this says x2 is less than or equal to 15. So that means this is my x2. एक second इसमें ये भी करते हैं. We will add the axis also. So this becomes my x1. से कर देते हैं so that it shows x2 fine. इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे so that we are able to see everything more clearly.
let us add grid lines also in case we may require. अभी पता नहीं हमको लगेगा कि नहीं, but let us add them. कोई नुकसान नहीं है. Now let's add the second equation, which says x2 is less than or equal to 15. The x values are these and the y values are these. So now what are we actually talking about? X2 less than or equal to 15. So that means it is talking about all the values below this. And when we are looking at this line, so all the values within this. So that means your common region is only just this part. Fine. This becomes your common region. Are we okay with this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let's add the third one. This is my series. X values are 0 and 6. Y values are 3, 3 and 0. So I say okay. Now this also says less than or equal to 18. So that means we are talking about this area. So now your common area is only just this much part. Fine. Are we okay? यहाँ तक? Yes, sir. अब हम इसमें ये करते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स देखते हैं. अब अगर हम इसमें एक्सट्रीम पॉइंट देखेंगे तो दिस वुड बी 1 पॉइंट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड. करेक्ट? सो माय यूजिंग माय एक्सट्रीम पॉइंट्स, I've got 3 points. One is 0, 0. Second is 0, 3. And next is 6, 0. Correct? Now यहाँ पर मेरा these are my points. This is my x1, x2, and this becomes my objective value. Fine. Objective value हम कैसे डालेंगे? Using objective function 4x1 plus 8x2. So it would be equals to 4 into the value of x1 equals to 4 plus क्या था आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन? 8x2 plus 8 into value of x2. तो अभी इधर पर it would be 0, 0. So 0 ही रहेगा. What about 0, 3? 0, 3 it would be 24. What about this 6, 0? Still it is 24. So that means it is this value is also maximum and this value is also maximum. So we have got two values. Let us look at other values on the same line. Let us say 2, 2. अगर हम 2, 2 लेते हैं तो क्या होगा? तो भी सेम आ रहा है 24. It says 3 into 2 plus 8 into 2. 3 into 2 is 6
plus 8 into 2 is 16. So that gives me total 24. Correct, na? Yes. What about ये बीच में का है तो मतलब कि 4,1. Let us look at one more, that is 4,1. So 4, 1, I've got 24 again. So that says even this point is a maximum value. That means any point on this line will give me a maximum value. So now in this particular case, you have multiple optimal solution. Okay, यहाँ तक clear है? Yes, sir. Okay, let us look at using the isoprofit line method. So, sir, could you just explain once Yes. again? Okay. What you So just can you please explain? multiple optimal solution? What is happening here is when we are evaluating multiple extreme points. Okay, we started with multiple extreme points and we were having only just 3 points, 3 extreme points. One was this, the other was this, and the third one was this. So अगर मैं उसको इस तरह से यहाँ पर अगर मैं common region को shade करूँ, so it would be easy for me to actually understand. Let me put it in a shaded form so that fine. कितना तक ओके? सो हमारे पास में एक्चुअली में सिर्फ ये 3 ही पॉइंट्स थे. फाइन. फॉर दिस 3 पॉइंट्स व्हेन आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग आई रियलाइज्ड 0 पर तो 0 है, बट व्हेन आई लुक एट दिस पॉइंट व्हिच इज 0,3 and at this point which is 6,0 I got values, objective value as 24 and 24. So that itself says that instead of one maximum solution I have got 2 maximum solutions. Okay, so what I did was, let me just check out the other points on this same line. So I started looking at this one. So this is 2,2. So I checked it for 2,2 and I got 24. When I checked it for this point, this is 4,1. So that is again 24. So that means any point on this line will give you a solution which is equal to the maximum objective value. Any point on this line will give you a solution which is equal to the maximum objective value on value of the your this thing. मतलब इसमें सब में से सबसे ज़्यादा values आपको इसी line पर आ रहे हैं. Fine. So that indicates that there are multiple optimal solution possible if the point lies, operating point lies on this line. Okay. So I have one doubt over here. Yeah, please. So the Bolliye. points which we are considering, they have to be extreme points, right? Can't they be consecutive points like 2, 3 and all? No, normally we start with always extreme points. Okay, sir. Okay. Got it. Yes. So that's the reason why this method is called as extreme points method. But when we saw in out of 3 occasions, 2 occasions में आपको 2 जगह पर maximum value मिली है, इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिल रही है. So we thought we will just investigate these 2 additional points. ठीक है, because they were easy to look at. अब isoprofit line method से अगर मैं 4-1 कैसे लिया आपने? Can you explain? कौन सा? Last वाला point 4-1. 4-1 मैंने ये इस तरह से लिया. देखिए ये जो है ना, ये 2.5 पे था. Okay. ये देखिए बीच में है ऑलमोस्ट, है ना? अच्छा, तो सर आपने 1 assume ये मैंने 1 ये इधर पर बीच में आएगा ना, मतलब कहीं तो बीच में मतलब 1 आएगा.
अगर आप एग्जैक्ट मिड में देखोगे तो इट वुड बी 1। आप एक काम और कर सकते हो इसमें, ये जो अगर मैं इसको और थोड़ा बड़ा करूं तो मुझे वो भी और क्लियरली दिखेगा। ये देखिए, ये 2.5 पे आ रहा है ना। मेरा इधर पर स्केल 2 का था। 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 यूनिट्स ऑन दिस साइड। सो ग्राफ का स्केल आप कैसे यूज करते हो उस हिसाब से है। इसको भी हम लोग शायद चेंज कर सकते हैं। एक सेकेंड, जस्ट अभी ठीक है। अभी आपको ये वैल्यू बराबर 1 दिख रही है। हेलो, Yes, sir. हाँ, 4,1 आ गया ना बराबर। आप इस तरह से इवन एक्सिस को भी कस्टमाइज कर सकते हो। हर एक यूनिट दिखना चाहिए एक एक यूनिट के हिसाब से भी, सो यू कैन कस्टमाइज इट। फाइन, अभी सब बराबर एकदम क्लियर है। Yes, sir. यही अगर आप लोग आमने सामने होते तो हम लोग ग्राफ पेपर पर काम कर रहे होते थे तो शायद बहुत ही आसान होता था। बट मुझे लगता है कि एक्सेल भी काफ़ी आसान कर रखा है उन्होंने। सिर्फ यही है कि हमको पता होना चाहिए क्या क्या कैसे कहाँ क्या कर सकते हैं। फाइन, ग्राफ्स में तो आप एक्सपर्ट हो ही जाओगे, ये तो श्योर है। अभी हो गए क्या? बाप रे, कोई कुछ भी नहीं बोलता है। Yes, sir. Like we know a bit of graphs. Now you know a bit। नहीं यार, काफी अच्छे से मालूम पड़ गया। अब आप एक्सेस ग्रिड लाइंस वगैरह सब चेंज कर सकते हो, मेजर माइनर एक्सेस ऐड कर सकते हो। हाँ, अभी इसमें डुअल एक्सेस वाला भी कर सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन हैव वन मोर एक्सेस। सो अभी हम लोग एक्स और वाई ले रहे हैं, इसमें ही एक और साथ में ले सकते हैं। तो 3 टाइप के ग्राफ भी हम इसमें डाल सकते हैं। 3 नहीं, 2 टाइप के ग्राफ एक साथ कर सकते हैं। So anyway, that is not our scope. So अभी के लिए इधर ही तक रुकेंगे। हाँ, let us try working it out with isoprofit also। तो उससे अपने को श्योर हो जाएगा कि ये इसमें मल्टीपल ये सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है। So what is your objective function?
4x1 plus 8x2. So I'll just copy this, या पूरा ही ले लेते हैं, and we'll come here. और इसको लेते हैं ताकि हम अपना पूरा सब वर्कआउट कर सकें. सो मैक्सिमाइज वगैरह तो बाद में करेंगे. सो दिस इज माई z इक्वल्स टू 4x1 प्लस 8x2, एंड यहाँ पर मैं वो वैल्यूज चेंज करते जाऊंगा. सो आई वुड लाइक दैट ऑल्सो टू रिफ्लेक्ट हियर. सो हम वापस से कॉनकैटिनेट ले लेते हैं, इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट फंक्शन. लेट मी पुट इट अंडर कोट्स so that it will be treated as text, comma, and this value, say okay, close. अब यहाँ पर आपके कोएफिशिएंट्स क्या रहेंगे? Based on this, it would be 4x1 plus 8x2. So यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, and we will have some of the other equations coming in. ठीक? So we'll add this also to our graph. So add, this is my series name, x values, y values, and I say okay. ये देख रहे हैं येलो वाली लाइन? This is your objective function. Let me increase it, say 20. Can you see it is moving parallelly to this line? Let's make it 25. The minute I make it 25, it goes just outside this line. 26 say it would be very clearly visible. Okay, so since 24 is your objective value, let me try doing it this. Can you see it is overlapping this equation? Correct? It is exactly overlapping this one. और ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये स्लोप देखिए, दोनों भी इक्वेशंस का ऑलमोस्ट सेम ही है. 3, 6, 18, ठीक है, 4, 8, 24. कैन यू सी दिस? कोई सेम इक्वेशन x1 प्लस x2, x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 3, उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा. करेक्ट है ना? सो दैट मीन्स सिर्फ स्केलिंग है. दैट्स द रीजन व्हाई यू विल सी दैट योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप कर रहे हैं. That's the reason why you have multiple optimal solution in this particular case. Are we clear? Yes, sir. Yes. अब यही same situation if I go ahead and do it for the other one.
Okay, so I'll just quickly plot it so that do you need explanation now, or I can just simply go ahead and plot it fast? So you can plot it. Sorry, plot. Okay, thank you. So मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर से ये चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सो इट वुड बी इजी फॉर मी टू एक्चुअली डू इट. ठीक है, ये आपको वो कोएफिशिएंट्स एक्सप्लेन करने के लिए मैंने किया था, एंड यू कैन आल्सो यूज इट फॉर डूइंग इट यूजिंग सॉल्वर. दिस बिकम्स माय फर्स्ट. ये फायदा है एक्सेल पे काम करने का. एक जगह पर आपने जो भी काम किया है कैन बी कॉपीड एंड कैन बी यूज्ड एट अदर प्लेसेस. यहाँ पर इट वुड बी 2, 1 and 40. This is 5. This is -2 and 20. Then on this side, x1 would be 1, x2 would be 0, and this would be 25. So irrespective of whatever be the value of this, it would be so एक तरह से देखा जाए तो हमेशा हर हालत में ये कुछ भी वैल्यूज लो आप, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू फाइन. नाउ कमिंग टू दिस साइड, अभी हम पहले प्लॉट कर लेते हैं सो दैट वी विल कम टू नो एग्जैक्टली व्हाट आर वी रेफरिंग टू. दिस इज इनफिजिबल सॉल्यूशन, तो उसके लिए let me just select this and insert my scatter plot. Let me switch. So this is what I have got. It says x2x1 plus x2 is less than or equal to 40. So that means I am referring to this region. Okay. And when I add, इसके पहले let me edit this one. So let me add. So this becomes my series. X values would be this and y values would be this value. See, okay. Now let us look at this. इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि ये सिर्फ 15 तक का ले रहा है ना. सो गड़बड़ है. If x1 is 0, so y equals to this, and when y is 0, so that time x equals to फाइन. यहाँ पर ये नेगेटिव साइड में आ रहा है तो हमको उसको एक्सटेंड करके थोड़ा और इधर पर तक में लेना पड़ेगा. नाउ इफ आई लुक एट दिस लेस देन और इक्वल टू, सो वो मतलब इट वुड बी टॉकिंग अबाउट दिस रीजन. ठीक है, एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस रीजन. सो मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए थे इसलिए मैंने x और y में इस तरह से लिया था. नाउ since x2 मुझे इधर पर नेगेटिव आ रहा है तो let me take up a higher value. So instead of 0, let me say
x1 so if I say x1 equals to कितना लेंगे हम लोग? So if we are taking the values as 0, -10, 15, 15, then the line is getting extended. एक काम करता हूँ, इसको मैं 10 ले लेता हूँ. So if I take x1 equals to 10, तो 10 into 5 would be 50, correct? Yes. 10 into 5 would be 50 and 50 आप इस तरफ जाएगा तो 20 minus 50 हो जाएगा. Okay. -30. So minus 30 हो गया. Minus 2x2 is equal to minus 30. So x2 would be minus 30 upon 2. So this will become 15. करेक्ट. ये पॉजिटिव साइड में आ गया आपका. और ये वाला वैल्यू भी हम लोग कुछ थोड़ा सा हायर साइड में ले लेते हैं ताकि हमको कुछ x2 इक्वल्स टू 0 ले रहा हूँ तो ये मेरे को पॉइंट मिल रहा है और एक ये मिल रहा है. तो इसको 10 की जगह पर थोड़ा और बड़ा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो से अगर मैं इसको 20 तक लेता हूँ, सो इफ आई टेक दैट एज 20, सो इंस्टेड ऑफ 15 दिस विल बी equals to, let me put it in bracket, 20 minus 5 into my value of x1. ठीक है, बराबर ना? 20 minus my value of x1 divided by this value. Correct? Is it okay? Now let us look at the region that is we are talking about. ये वाला क्या बोल रहा है? This is talking about this region. Fine. First वाला. Second equation says less than or equal to 20. So that means we are talking about दिस रीजन नीचे का. उसमें भी काफी कुछ अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव रीजन की बात कर रहा है. फाइन. सो दैट मीन्स दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस रीजन. तो उसमें ये वाला पार्ट तो फिर भी चलो कॉमन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, दिस इज दिस रीजन एंड दिस इज लोअर साइड. सो दैट मीन्स दिस इज द कॉमन रीजन दैट वी आर एक्चुअली रेफरिंग टू. नाउ लेट अस लुक एट दिस थर्ड वन, x1 greater than or equal to 25. So when I say x1 greater than or equal to 25, so that means x1 line will come here, and greater than or equal to 25, that means it will be talking about this region, whereas ये दोनों lines are talking about this region. So there is no common region between all the three lines, and hence you will say that there is no it is an infeasible solution. That means we cannot have a common region for all the three equations. I'll just plot this one also for you. समझ में आया क्या ये? Yes. So that means it is referring to a region. अब इसमें मेरे पास में दो जगह पर रीजन्स हैं, एक ये सॉरी one is this region
and the second is this region. So दोनों के लिए एक तरह से देखा जाए तो वो रीजन, कॉमन रीजन हमको मिल ही नहीं रहा है. And the minute you are not getting a common region, so we cannot say that there is a solution that exists. Now, why this kind of situation could have arisen? One, या तो मुझे मेरा constraints कुछ ज़्यादा ही hypothetical है, okay, realistic नहीं है, so that could be one of the reasons why I would have got this. That could be one of the reasons why I could have got this, or it needs to be revised. Okay, so या तो ये गलत है या इन दोनों में से कहीं तो कुछ गलत है, but mostly इसके गलत होने के chances काफी ज़्यादा हैं. Then only you will come across a situation like this. Are we okay with this? Any doubts? No, sir. Okay, so infeasible, that means there is no feasible solution possible. Fine. एक और है, that is unbounded solution. Unbounded में we are talking about maximization. इसको भी quickly कर देते हैं. So I have pasted this here. I've got only two constraints in this side, so उस हिसाब से हम डालना शुरू करेंगे. So z value would be different. Second is this one. So here the equation would be 4x1 plus 8x2 greater than or equal to 24, whereas यहाँ पर 2x1 plus 10x2 greater than or equal to 15. Okay. और ये तीसरा वाला है ही नहीं. फाइन, आपको नेगेटिव में भी वैल्यूज मिल रही है. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, एक मिनट, मैंने यहाँ पर ये सब कुछ नहीं है. अभी इक्वेशंस को देखते हैं. One is 4x1 plus 8x2 greater than or equal to 24. So when I look at this greater than or equal to 24, so that means I'm talking about this area. Fine. और ये वाले को अगर हम देखेंगे, it is talking about greater than or equal to 15. So that means this is also talking about this area. तो हम इसको थोड़ा सा और इस तरफ में पॉजिटिव साइड में देख लेते हैं, एक्सटेंड करके. So क्या वैल्यूज आती है. ओके, सो यहाँ पर हमने
ये -2.5 है ना, so हमको इसको और पॉजिटिव साइड में लेके जाना पड़ेगा so that I am able to get a bigger value. So let me say इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये मेरा लाइन कुछ इस तरह का आएगा rather than fine. And when we say we are talking about greater than or equal to, that means we are talking about this side. Here we are saying this side, so that means the common area is on this side. And now when we say maximize z equals to 15x1, so maximize इस side में हम कितना दूर तक जा सकते हैं? There is no limit. We can go to any extremes. And when we say we can go to any extremes, we call this as an unbounded solution. अब यहीं पर अगर minimize होता था तो we could have actually moved on the inner side and we could have got some solution. अब इसमें हम लोग से positive side का ही लेंगे, not this side. Okay, so this side and above. So इस side में you can go to any limits if you are talking about maximization. So your common region is clear. This is your common region. Are we clear up to this? Yes, sir. So आप इस साइड में कितना भी लिमिट्स तक जा सकते हो, इसके लिए we call this as unbounded solution. So there is no limit. We can maximize to any extent. The market is open to play. Fine. Shall we stop?